Jawan Limited issued 50,000 5% debentures of rupees 10 each at 10% discount. So it is the case of issue of debentures at discount. The debentures are redeemed at par after 5 years. So issue at discount and redeemable at par. After 5 years, that is redemption ka period, which is not required here for us in the current entries. Pass necessary journal entries in books of Jawan Limited. Okay. So first is you will receive the amount in your bank account. Who you? You means the company. So first entry, bank account debit. It is a lump sum case, so all amount will be received in lump sum only. कुछ नहीं लिखा है तो lump sum ही है. Bank account debit to debenture application account. Now, what will be the amount? See, 5 lakh, that is 50,000 into 10 rupees. So 5 lakh is the face value, but 10% discount hai. So 10% discount of 5 lakhs will be less 50,000. 10% discount 50,000 हो गया. So 4,50,000 you are receiving at the time of application. ठीक है, तो 4,50,000 जितना अमाउंट रिसीव होगा, यदि प्रीमियम होता फेस वैल्यू से ज्यादा रिसीव होता तो मैं प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू जो टोटल अमाउंट है उससे एंट्री करती. पार है तो पार से करनी ही है. एंड व्हेन देयर इज डिस्काउंट, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बिकॉज दैट नोबडी इज गोइंग टू पे यू. तो नेट जो अमाउंट है उसी से हमेशा एंट्री होगी फॉर रिसीविंग इन बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4,50,000. Being application money received. Now the second part, that is the second entry, bank account debit to debenture application. So debenture application account debit डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. अब डिस्काउंट है 50,000 का. डिस्काउंट ऑन इश्यू इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स इज द रूल. तो डेबिट करो डिस्काउंट को बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 5% डिबेंचर्स, इसलिए टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट. सो टोटल एप्लीकेशन में आपने डाला 4,50,000, वो ही अमाउंट यहां डेबिट करेंगे 4,50,000. एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज द डिस्काउंट? यू जस्ट सॉ 50,000. सो 50,000 here, that is 50,000 number of debentures into 1 rupees. Okay, and to 5% debenture account, that is full 50,000 into 10. So 5 lakh, and this was after discount 50,000 into 9 debenture application 4,50,000. Narration being 50,000 debentures
allotted with discount at the rate 10%. So second case which we saw is issue at discount and redeemable at par.